राधे राधे सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विनय कुमार, हाय। गुड। विनय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। लाइक डन कर लीजिए। लाइक कर दिया, थैंक यू। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसे हैं विनय कुमार जी? आप वो बहुत अच्छे हैं, हम मस्त एकदम, सब बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसे हैं? आप कहाँ से हो? अच्छा जी, लखनऊ से हूँ। मैं लखनऊ से हूँ भैया जी। लखनऊ कहाँ से? लखनऊ आलमबाग से।
हेलो। आप कहाँ से हो? हम लखनऊ से हैं भैया जी। विनोद, हाय विनोद कुमार जी। मजनू, उनके मोबर वाली इमोजी मत भेजिए आप लोग। मैं लखनऊ से हूँ भाई। आप कहाँ से हैं? विनोद, अच्छा जी। विनोद भाई, हम लखनऊ से हैं। आप बताइए आप कहाँ से हैं? यूपी, गोंडा। अच्छा जी, आप गोंडा से हैं। बहुत अच्छी बात है। हमें भी सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। जी, हाय दीदी। हाय बहन। बिल्कुल भाई, आपको सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा। आप भी चैनल चलाते हैं। अच्छा जी, हाँ आपका चैनल तो है। 420 सब्सक्राइबर भी हैं। हमें भी सपोर्ट कीजिए। अंजलि, सभी लोग हमारे विनोद भाई को भी ज्वाइन कर लीजिए भाई। और आप लोग विनोद भाई का भी सपोर्ट करिए। विनोद भाई, अगर आपने हमें ज्वाइन किया है तो हम आपको रिटर्न भी कर देंगे। हमारे लाइव का टाइम है सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक, शाम को 4 बजे से 6:30 तक। नाइट की लाइव हम रोज़ नहीं चलाते हैं। जब फ्री रहते हैं तो नाइट की लाइव चलाते हैं, नहीं तो ये हमारा टाइम नहीं है। आज हम थोड़ा सा फ्री थे तो हमने कहा
चालू कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। कृतिका, हेलो संजू दीदी, हेलो कृतिका बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्तिका कृतिका है, कृतिका है। विनोद भाई आपको ब्लू कर दे रहे हैं, आप सभी को ज्वाइन कर लीजिए। कृतिका पांडे, और बहन कैसी हो आप? अच्छा जी, आप अयोध्या से हैं ना? हाँ हाँ कृतिका जी, अभी याद आया। आपको ज्वाइन कर लिया हूँ, क्या हो गए हैं? जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको हम सुबह रिटर्न करेंगे, क्योंकि तुरंत रिटर्न किसी से नहीं लेना चाहिए, आपको भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी। हमारे आज सब्सक्राइबर 12 कम हो गए थे सुबह, नहीं तो 532 तो हमारे सुबह ही थे, लेकिन घट गए थे। पता नहीं क्यों लोग ज्वाइन करते हैं, जब अन करना रहता है तो कमेंट छोड़ दिया हूँ 3 वीडियो पर। थैंक यू मेरे भाई, आपको हम रिटर्न कर देंगे, आप परेशान मत होइएगा। हमारे तो एक बात नहीं समझ में आती कि लोग अगर अन करना रहता है तो फिर ज्वाइन क्यों करते हैं, अन कर देते हैं लोग बहुत। कल मेरा 14 अन हो गए। हाँ यही तो दिक्कत है, पता है भाई, ऐसा नहीं है यूट्यूब नहीं कम कर रहा है, ये हमारे ही लोग कम कर रहे हैं, पता है आपको? आप लाइक डन। हमारे देवर जी को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। प्लीज़ सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैं रिटर्न कर दूंगा। सभी लोग विनोद भाई को ज्वाइन कर लीजिए, भाई विनोद भाई आपको रिटर्न कर देंगे। विनोद भाई आपको हम ब्लू कर दें क्या? आप सबको ज्वाइन कर लीजिए, बताइए आप। मन नहीं माना तो मैं आ गया, लेकिन आप बिना वजह के नाराज़ हो गए थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद भाई बताए नहीं आप, अगर आपको ज्वाइनिंग करना हो तो आपको ब्लू कर दें, आप खुद ही सबको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे लगाव सा हो गया जी, बिल्कुल भैया जी, हो जाता है। सभी लोग शामिल हो लो, मैं वापस लौटाऊंगा। कृतिका बहन,
ज़्यादा ब्लू देने से कमेंट नहीं शो होता है सिस्टर, जिस वजह से ब्लू नहीं लेता ज़्यादा। अच्छा जी, हमारा तो बिना ब्लू के शो ही नहीं करता किसी के लाइव में। भाभी भोजन पानी हुआ का? हाँ भैया देवर जी, हो गया भोजन पानी हमारा। कोई बात नहीं भैया जी, आपको नहीं करेंगे ब्लू, आपको ऐसे सब लोग ज्वाइन कर लेंगे जो लोग करना चाहेंगे। और कृतिका बहन, आप प्लीज़ ज़्यादातर कमेंट हमें हिंदी में करिए, क्योंकि हम ज़्यादा इंग्लिश हमारे समझ में कम आती है। सिस्टर जी, मेरा फ़ोन आ रहा है, आप रिटर्न कर दीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल भैया जी, आप परेशान मत होइए, आपका रिटर्न कर देंगे हम। अच्छा ठीक है, ब्लू दे रहे हैं आपको, लेकिन हिंदी में कमेंट करा करो हमको। इंग्लिश में करोगे जितना हमारे समझ में आएगा उतने का आपको जवाब मिलेगा। जो मेरे समझ में नहीं आएगा उसका जवाब नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे मुझे जवाब नहीं दे रही हो। तो इसलिए मैंने बता दिया। सही बात है भैया जी, लेकिन क्या करें अब। मैं नोटिफिकेशन भी चालू कर लिया हूँ सिस्टर, आपकी लाइव आएगी तो मैं आ जाऊँगा। ओके ओके भैया जी। विनोद भैया, मैंने आपको ज्वाइन कर लिया है। विनोद भैया, आपको कृतिका बहन ने ज्वाइन कर लिया है, आप उनको रिटर्न कर दीजिएगा। थैंक यू पाड़ी जी, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। सभी लोग ईमानदारी से सबका रिटर्न करा करिए, और एक बार ज्वाइन करने के बाद अन मत किया करिए भाई। अगर अन करना है तो ज्वाइन मत करिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिसको अगर अन करना है तो वो लोग ज्वाइन ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। और बिना अन किए तो इतने कम नहीं हो रहे हैं। आज मैंने अपने सब्सक्राइबर चेक किए थे, उसमें मुझे कितने लोगों ने अन किया है मैंने खुद देखा था। ओम नमो शिवाय। ओम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक डन करते चलिए सभी लोग। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भाई, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मेरा फुल नाम विनोद मिश्रा है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, आप भी मिश्रा हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विनोद भाई, आपका तो शो कर रहा है कमेंट, लेकिन मेरा बिना ब्लू के नहीं शो करेगा, तो आपको तो ब्लू देना ही पड़ेगा। ओम नमो शिवाय। ये वाली आईडी ऐसे कुछ जानी पहचानी लग रही है हमको। ओम वाली।
नहीं सिस्टर, एक साथ में सब कोई हम नहीं करते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप चेक करिएगा YT स्टूडियो में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसमें देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आपको अर्न किया है। उसमें सबका पता चल जाता है। मैंने आज चेक किया था। करते हैं लोग, अब एक जगह से तो है नहीं सब लोग, सब लोग अलग अलग जगह से हैं, अपने अपने से किए तो हमारा तो एक साथ कम हो जाता है। कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? लेकिन हमको लग रहा है कि इस ID को हम जानते हैं पहले से, लेकिन ओम वाली ID किसकी है ये? खाना खाया आपने? आप हमारा विश्वास न करिए, आप अपने मोबाइल में चेक करिएगा। जी ओम जी, आपको हमको लग रहा है कि ID आपकी हम जानते तो हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है किसकी है। विनोद भाई, आपको यकीन नहीं है तो आप अपने YT स्टूडियो में चेक करिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि करते हैं लोग कि हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए, अगर मैंने आपको ज्वाइन किया, ठीक, एक बार अपने उससे सोच के देखिए, और बिना हम अर्न नहीं करेंगे तो आप हमारे सब्सक्राइबर कैसे हट जाएंगे? आप नए लोगों के लाइव में इसको लेकर जाता हूँ, ज़्यादातर कमेंट नहीं करता, इस ID से ज़्यादा। अच्छा जी, उंगली ठीक हो गई क्या? हम कह रहे हैं हम इस ID को जानते हैं। हाँ, उंगली लगभग लगभग सही हो गई है। आप हमें जानते हो क्या? हाँ बिल्कुल जानते हैं। अभी तक तो डाउट था, लेकिन अब क्लियर हो गया। अभी कोई डाउट नहीं है। पता है विनोद भाई, ये नहीं समझ में आ रहा लोगों की मानसिकता कैसी होती जा रही है। आप हमें जानते हो। हाँ, हो सकता है आप हमें ना जानते हों, लेकिन हम आपको जानते हैं। कह तो रहे हैं मेरे भाई, आप खुद सोचो कि अगर हमने आपको ज्वाइन कर लिया, ठीक, अपने मोबाइल से एक बार आपको हमने सब्सक्राइब कर दिया, दोबारा अगर हम वहाँ पर अर्न नहीं करेंगे आपको, तो आप अर्न कैसे हो जाते हो? हमें भी तो बताओ, कैसे हो जाते हो? जैसे आज मैंने कई लोगों को देखा, हम तो पहली बार आया हूँ आपके लाइव में। नहीं नहीं, आप पहली बार आए हैं और मैंने आपको ब्लू नहीं दिया। आपके पास ब्लू है? अगर आपके पास ब्लू है तो आप पहली बार तो नहीं आए हैं। कीर्तिका बहन, पहली बात तो आप हमें हिंदी में कमेंट करो। दीदी आप नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। अभी आपको विनोद भाई लग रहा है ऐसा, लेकिन जिस दिन आप चेक करोगे ना, उस दिन आप खुद कहोगे हमसे, हमारी लाइव में आकर के, या हम आपकी लाइव में होंगे तब भी कहोगे कि नहीं बहन आप सही कह रही थी। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन आप खुद ही हमें बोलोगे कि नहीं हम किसी दिन सही बोले थे। हमको भी पहले ऐसा ही लगता था,
कि लोग इकट्ठा कैसे कर देते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 कम हो जा रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने देखा तो मेरी आंखें खुल गई। चलो बाय 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 बाय। चलो बाय बाय। आज लाइव में मिली, मैंने रिटर्न करने के लिए बोला तो वह कहते हैं कि रिटर्न कर दिया, कमेंट करके छोड़ दिया। हम क्या बोल रहे हैं भाई, आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। दुनिया बहुत गोल है। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट ओम जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि आपको भी। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जी, बिल्कुल। पता है ओम भाई, आज मैंने जितना किसी और के लाइव से ज्वाइन किया था, मैं इसको विश्वास पर या ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है इसको। जितने को मैंने आज लाइव से ज्वाइन किया था किसी के, और उनका कमेंट अभी भी हमारे में पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, हम आपको क्यों बता दें कि आप कौन हैं, आपको पता है आप कौन हैं। ओम जी आपको बिल्कुल पता है, और आप हमें चढ़ाइए मत। बताओ, हमें कुछ नहीं पता है, बताओ। अच्छा जी, भोजन करने तब बात करता हूँ सिस्टर। कोई बात नहीं भैया जी, आप ऑन कर दीजिए, रख दीजिए, भोजन पानी कर लीजिए। हमें कुछ नहीं पता है आप कौन हो। हैं, अच्छा जी, कोई बात नहीं। मेरी बकरी चोरी हो गई। अच्छा जी, अभी पता चला आप कौन है कि अभी भी नहीं पता चला आपको? राधे 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 राधे। लाइक भी करते चलिए सभी लोग, लाइक करते चलिए भाई। ब्लू कर दो, आप ही ने तो कहा था रिटर्न कर लो। लाइक डन, थैंक यू। तो मैंने रिटर्न कर लिया था, अभी आप कह रहे हो ब्लू कर दो तो ब्लू। वैसे आपको कमेंट तो शो कर रहा है, आप समझ गए, हम पहले से ही समझ गए हैं। आपने पहचाना नहीं? अरे जाओ, ऐसा कैसे है, हम बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं। हमारे जैसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम एक बार आईडी देखने के बाद पहचान लेते हैं।
बताओ मैं कौन हूँ? क्यों आप नहीं जानते हैं आप कौन हैं? मेरी बकरी चोरी हो गई, आप नहीं जानते हैं? मतलब आपकी बकरी चोरी हो गई। राधे 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 राधे। भावे कमल आड़ी लिया आपने। पहचाना आपने अपने आप को? वैसे आपका कमेंट शो कर रहा है तो आपको भी पता है कि हम पहचान रहे हैं। लग बताओ, इंतज़ार कर रही हो? नहीं, इंतज़ार नहीं कर रहे हैं आज। आज नहीं आएंगे क्या? नहीं, थोड़ा सा काम से गए हैं आज। ये लाल वाली मुंडी कौन भेज रहा है? बाबा इसको मत भेजिए। अमरीश राधे कृष्णा राधे कृष्णा। भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमरीश क्या लिखे हैं? आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी लोग लाइक करते रहिए भाई। लाइक भी बढ़ा दिया करो मेरे भाई। हंस लो हंस लो, बकरी तो चोरी हो ही गई है।
आपको क्या लगा कि आप अपने आईडी से नहीं, वो पुरानी आईडी से नहीं आएंगे तो हम नहीं पहचानेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। गौर मानी जी, आप गौर लागत बानी जी है। खुश रहिए भैया जी। दीपेश, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। नहीं दोगे क्या? नहीं देंगे ब्लू आपको। आप जब मन करता है तब आप गुस्सा होते हैं, आप कहते हैं हमारे ब्लू ले लो, ब्लू ले लो, ब्लू ले लो। जब आपका कमेंट शो कर रहा है तो ब्लू का कोई काम ही नहीं है। दीपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइव में। लाइक भी डन करते चलिए सभी लोग। लाइक के लिए बहुत कहना पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। नहीं दोगी क्या? ब्लू का क्या करेंगे आप? जब आपका कमेंट शो कर रहा है तो वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप 2-4 दिन बाद फिर कहेंगे रिटर्न कर लो, चलो ब्लू कर दे रहे हैं। पंडिताइन के चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम, दिल से गहराई से। अच्छा, धन्यवाद। लाइक डन। एस भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। एस मिश्रा, दीपेश भैया, आप कहाँ से हैं? कैसे हो भाभी जी? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ यश भाई। आप बताइए, आप कैसे हैं? दीपेश भैया, आपने बताया नहीं आप कहाँ से हैं। मैं ठीक हूँ भाभी जी, बहुत अच्छी बात है भाई, आप ठीक रहिए। भगवान करें आप हमेशा अच्छे रहिए।
खाना वाना हो गया आज भैया आपका? भाभी जी आप बहुत अच्छा जी। मजाक करना कोई हमारे यश भाई से सीखो भाई, कितना अच्छा मजाक कर लेते हैं। और आप खुद मजाक करके खुद हंस भी रहे हैं। कोई नहीं, हंस लो। का जी हम नहीं, खराब शब्द की बात बिल्कुल भी नहीं है भाई, आप हमें गलत समझ लेते हैं। पंडिताइन का मतलब गलत शब्द नहीं है, बस आप हमें थोड़ा सा ब्लू ले लो। अच्छा जी ठीक है, ओके लकी देवर जी, ब्लू ले रहे हैं आपका। बड़ी आफत है, ब्लू दे दो फिर ब्लू ले लो। भाभी जी के साथ देवर मजाक कर सकते हैं ना भाभी जी? बिल्कुल भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक करने में कोई बुराई नहीं है। लकी देवर जी आपका ब्लू रिटर्न कर दिया है मैंने उस आईडी पर। अच्छा, उस आईडी पर दे देना, ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी अगर कुछ बोलेगा नहीं, हंसी मजाक नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर? चुपचाप बैठे रहकर लाइव में बस। थैंक यू। ठीक है देवर जी आइए। अरे भैया जी, मैंने तो पहले ही कहा कि गलत क्या गलत है इसमें, आप तो पहले, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। हम रहुआ लाइफ में नया आइल बानी का जी, बार बार पूछे। अरे हम भूल जाते हैं भाई, अब हम इसका क्या करें बताओ? इसमें आपकी गलती तो बिल्कुल नहीं है, हमारी गलती है दीपेश जी, हमारी गलती तो हम मान तो रहे हैं। इतना तेज हमारा दिमाग नहीं है। दे दो, इस पे तो मैंने आपको ब्लू दे दिया है, मेरी बकरी चोरी हो गई। इस पे पहले से ब्लू है, आप नीले होकर के आए हैं। नहीं आप बुरा मत मानिए, मैंने पूछ लिया इसके लिए। बाकी जब आप पंडिताइन बोले तब हमने पूछ लिया आपसे। मतलब आप बोल सकते हैं कुछ भी, हम नहीं बोल सकते हैं। गलत बात है।
यस भैया, आप कहाँ चले गए भाई? मेरी बकरी चोरी हो गई। अच्छा जी, कहाँ हुआ लाइव? अरे ऐसा मैंने कब कह दिया भैया? आज हमारी लाइव में हो क्या रहा है? किसी से हम थोड़ा सा कुछ पूछ लेते हैं, सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं। हम जितना चाहते हैं कोई नाराज़ ना हो, उतने सभी लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लाइव में कहीं से भी आदमी जुड़ सकता है, और आप तो काफ़ी दिन से आ रहे हैं हमारी लाइव में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राधे 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 राधे। यस भैया। और हमारे देवर जी, आपको भी सपोर्टिंग कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार हुआ कि लाइव में बिहार से। अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इतनी जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात का बुरा मत माना करिए। हमारे यश भैया पहले नहीं नाराज़ होते थे। क्या मेरी कोई दिक्कत है बताइए? अरे नहीं भैया, ऐसा हमने कब कहा? आप तो अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलता है, मैंने पहले ही कहा है। तब भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हमको किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। ना देवी जी, आज तक हम रहुआ के कुछ गलत बोलने बानी जी, रहुआ के हैं भाभी जी के ही दर्जा देले बानी। हे भगवान, मैंने कब कह दिया भाई? आप लोगों को क्या कह दिया? मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया जी। अगर मुझसे कोई भी गलती लगी हो तो उसके लिए सॉरी। यस भैया, आपसे भी सॉरी। दीपेश भैया, आपसे भी सॉरी। और बताइए। राधे 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 राधे। आज तो हमारे सारे देवर ही जुड़े हैं, बहन एक को नहीं जुड़ी है। संजू जी, राधे 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 जी, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 10 नंबर का लाइक कर दिया आपको दीदी। थैंक यू भैया, थैंक यू।
नहीं, वो मैंने आपको इसलिए नहीं कहा था मैंने। हाँ, भोजन हो गई। मेरी बकरी का इसी साल मेरी बकरी का गोना है इसी साल। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। रहुआ भोजन हो गई जी जी। तनीषा हाय। रहुआ भोजन हाँ भैया जी, भोजन हो गया हमारा। आपने भोजन कर लिया? दीपेश भाई, मेरा भोजन हो गया है। आपने कर लिया भोजन? भैया जी के नहीं भैया जी, आज बारात में है कहीं, वहाँ भोजन कर लेंगे। भैया जी आपके आज पार्टी का खाना खाएंगे, घर का नहीं खाएंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत 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 अच्छी हूँ। और आप बताइए सिस्टर जी? तनीषा अच्छा जी। सभी लोग लाइक भी करते रहिए भाई। मैं अच्छी हूँ जी, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी हैं। और आप लोगों का भोजन हो गया? आप कहाँ से हो सिस्टर? मैं लखनऊ से हूँ सिस्टर। आप हमको भैया नहीं बोलिए, केवल दीपेश बोलना जी। काम करता हूँ, आप भैया बोलती हो। अब एक बात आपको बताएं, हमारी आदत पड़ गई है भैया जी बोलने की। सबको लाइव में बोलते रहते हैं भैया जी भैया जी भैया जी। चलो, हम आपको भी देवर जी बोलेंगे, आप प्रणाम करते हो तो। नहीं भैया बोलेंगे, और क्या। आप कहाँ से हो? अच्छा जी, बताया तो हमने, लखनऊ से हूँ। और आप बताइए तनीषा जी? आप सिस्टर मुझे बेटी बोल सकती हो? अच्छा बिटिया रानी। देवी जी आप कहाँ नहीं दीपेश जी, हम लखनऊ में रहते हैं। फैमिली भी हमारी लखनऊ में है, लेकिन हम लोग अमेठी के रहने वाले हैं। अमेठी ज़िला, अमेठी, यूपी।
और बताओ बिटिया रानी कैसी हो। आजमगढ़, आजमगढ़ हम जानते हैं यूपी, अमेठी, सुल्तानपुर, ये हमारे इधर पड़ता है। आजमगढ़ और उधर पड़ जाता है। लाइव डन कर दिया है बहन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सरोज बहन। नहीं जी देवर नहीं बोलिएगा तो भी कोई बात नहीं है, केवल दीपेश बोल दीजिए चलेगा, कोई बात नहीं। खाना हो गया जी। सरोज द्विवेदी जी खाना हो गया, आपका हो गया। आपने तो अपना गेटअप इतना चेंज कर लिया है कि मैं पहचान नहीं पाती हूँ। लाइक कर दिया है। अच्छा हमारी बिटिया रानी, आप सरोज बहन नहीं आती हैं। हाँ हाँ, इस समय इतना चेंज हो गई हैं हमारी सरोज बहन, इतना चेंज हो गई हैं कि हम पहचान नहीं पाते हैं। अगर नाम ना होता तो ना पहचानते। अच्छा जी हंस रहे हैं, ठीक है हंसिए हंसिए हंसिए। हंसने के लिए सरकार भी पैसा नहीं लेती है। राधे राधे। अब तो जीएसटी भी कम हो गया है। सरोज जी आज आपने अपनी लाइव चालू की थी कि नहीं? आज हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा मजाक कर लो, क्या करें ये बताओ। कितनी सुंदर लग रही हो। सो जाओ भौजी, अब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो सो जाएं। हम सो जाएंगे तो बतियाएगा कौन। सरोज बहन सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रही है सच में। बस हमारी नज़र न लगे हमारी बहन को बस। बाय बाय, गुड नाइट सिस्टर। अच्छा बिटिया रानी सोने जा रही हो क्या? और बताओ सरोज बहन, और तो सब बढ़िया है, मस्त है। आप तो आधे पे पहुंचा दिए भैया, तो हमने कहा हम भी थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं। ये बाय 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 बाय। अच्छा हमारी बिटिया रानी को नींद आ रही है। इतनी सुंदर बहन नहीं है, इतनी सुंदर बहन नहीं है। अच्छा जी, नहीं नहीं ये गलत बात है। आप बहुत 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 ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन हम आपसे शादी नहीं करेंगे ना, परेशान मत होना। सरोज बहन कल ओ तेरी, कल आगरा जा रही हो क्या जी? आपका आवाज़ तो हाँ होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है। हमको ये लगता है कि हमारी सरोज बहन बहुत सुंदर है। ये लो हमारी बिटिया रानी आ गई, गुड़िया गुड़िया है हमारी ये। लाइक डन, थैंक यू। आप कैसी हो मासी जी? ये शब्द बहुत अच्छा लगता है हमें, मासी जी। बहुत अच्छी हूँ हम। बिटिया रानी आप बताओ आप कैसी हो? सरोज बहन हमको भी ले चलो आगरा।
सब लोग कैसे हैं मासी जी? सब लोग अच्छे हैं गुड़िया रानी, हम भी अच्छे हैं। आप कैसी हो? वहीं से वीडियो कॉल करूँगी। अच्छा, मतलब ले नहीं जाओगी? हम ले जाने के लिए कह रहे हैं तो आप कह रहे हो वहाँ से वीडियो कॉल करके और ज़्यादा हमें ललचाओगी क्या? लाइव नहीं आऊँगी। अच्छा जी, खाना पीना हो गया आपका मासी जी? हाँ बिटिया रानी, खाना पीना तो हमारा हो गया। चलो तो सही, हम भी जाएंगे बहना, काहे परेशान हो रही हो? बस आप जाओ घूम के आओ, उसके बाद हम भी जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारी गुड़िया रानी अच्छी है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आप कल जा रही हो और हमारा आज 30 तारीख है, कल 31। अभी हमारे में टाइम है थोड़ा सा। हम जा रहे हैं 13 तारीख को। 13 को हमारा टिकट है मथुरा वृंदावन का। सुबह 6 बजे तैयार हो जाओ। नहीं तुम रहने दो हमें ले जाने के लिए, हम बाद में जाएंगे 13 तारीख को। कहा जी हम गलत लिख देवानी का कि आप कमेंट्स पढ़कर कुछ ना जी। नहीं आपने बिल्कुल सही लिखा है, कोई बात नहीं है। हमने बोला तो था भैया जी, अरे यार हमने बोला तो था आपको, आपने हमको लगता है सुना नहीं। मैंने बोला था कि ये तो सुनने वाले और देखने वाले को पता होता है, हमें कैसे पता है? अपनी ना अच्छाई किसी को दिखती है, ना किसी को अपनी बुराई दिखती है। मासी एक गाना सुनाओ। कौन सा सुनोगी हमारी गुड़िया रानी? आपके लिए तो कुछ भी। नहरिया पर नहरिया पर मिलो, तो नहरिया तो हमारे घर के पास में है। तुम इधर ही से तो जाओगी, कहाँ उड़ के थोड़ी नहरिया पहुँच जाओगी जो तुम हमको नहरिया बुला रही हो। हंस लो कोई भी। हम अपने घर के सामने ही आपको मिलेंगे। जब ऑटो जाएगी तो हमारे घर के सामने जाएगी बहना, कहीं से उड़ के नहीं जाओगी कोई भी। हमारी भतीजी इस गाने को बहुत अच्छा गाती है। क्या क्या बनाऊं साग सब्जी बता के जाना, क्या क्या बनाऊं साग सब्जी बता के जाना। गोल गोल आलू ससुर मोरे लागे, गोभी लागे सासुरानी बता के जाना, गोभी लगे सासुरानी बता के जाना। क्या क्या बनाऊं साग सब्जी बता के जाना। हाँ घर पर आ जाओ, वही तो बोल रही हूँ। नहीं वही तो ना बोलो, घर पे आ जाओ। यहाँ से तुमको हम बना के रास्ते के लिए खाना भी देंगे ना। राधे 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 राधे। संजय भैया राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी लाइव में आपका स्वागत है संजय भैया। पतिदेव जी जब जाएंगे सुहा की आई हो का। वेरी नाइस मासी जी, बहुत सुंदर। आए सरोज बहनी, सुहा की आई हो का। बहुत सुंदर जगाओ मत। लेके जाओ उनके कान के पास मोबाइल।
हम गा के सुनाएंगे। जीजा जी का पेट जैसे इंडिया का गेट। जीजा जी बड़े निराले हैं जीजा जी। ना जी कर जिंदगी जाता जी गलती पे ध्यान दे के चाहिए। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल अपने गलती पे ध्यान देना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। संजय भैया वहीं से उठा लो, वहीं से उठा लो। कल एकादशी व्रत है। हाँ, कल तो एकादशी व्रत है। राधे 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 राधे। जय श्री राधे कृष्ण जी किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आज भी। आज तो हमारे यहाँ भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मेरी भी, मेरी भी। आपकी कौन सी आज शादी है? आप समझे नहीं बात को। इतना टाइम बहुत बढ़िया सुंदर बा, सो नहीं रहे हैं। अच्छा, शादी करवाने गए हैं ना? हमारी छुटकी बहन आ गई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है छुटकी जी आपका हमारी लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव भी करते चलिए सभी लोग। आज भी हैं, कल भी हैं। तो आप अकेली जा रही हो क्या मथुरा? सरोज बहन, अब ये तो ना आपको पता है ना हमें पता है कि ज़िंदगी बर्बाद होगी कि आबाद हो जाएगी। ऐसा नहीं है सरोज बहन, शादी के बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारी आपकी कहीं बर्बाद हुई है क्या? हमको तो नहीं लगता है। शादी के बाद ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है। आज तो हमारे यहाँ भी किसी की ज़िंदगी आबाद करने गए हैं। मथुरा नहीं, आगरा ही जा रही हूँ। अच्छा जी, तो आगरा का पेठा खा के आना। कहाँ के कहाँ के कहाँ के पहुँचे सुहागन क्या बात है, क्या बात है। दीपेश भैया, दीपेश जी बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है। अयोध्या के कहवा कई पियर माटी, कहवा कई सुहाग माटी को दे जाए रे। बाय बाय, बाय बाय हमारी गुड़िया रानी। आप सो जाओ क्योंकि सुबह आपको स्कूल भी जाना होगा। गुड नाइट के मासी जी। अच्छा चलो मासी जी, मुझे नींद आ रही है। बाय बाय, गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट हमारी गुड़िया रानी। अच्छी नींद लेना और सुबह अच्छे से स्कूल जाना। मम्मी पापा को परेशान मत करना। शादी में मुझे किसी से ज्वाइन नहीं कराती हो। रोगी तो पक्का नहीं कराऊंगी, समझ लो। अच्छे से हंसते हुए आओ तो ज्वाइन कराऊँ आपको। सभी लोग भाई हमारी सरोज बहन को ज्वाइन कर लीजिए। पीछे छोड़ रही हो, तुमको पीछे छोड़ के कहाँ जाएंगे मेरी बहना। आपको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। आप तो हमारी बहना हो, वो भी बहुत प्यारी प्यारी। अगर हम लाइव में 1-2 दिन नहीं आ पाए फिर भी जगह तो वही रहेगी आपकी। 2 दिन नहीं मिलोगी कोई बात नहीं, हम आगरा से देख लेंगे आपको, वीडियो कॉल करेंगे।
हाय, आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं यहाँ हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात है। लाइफ क्या मतलब है यहाँ? सही बात है बहन, बिल्कुल एकदम करेक्ट। लाइक डन। थैंक यू, थैंक यू। ये सरोज बहन, ये जो अभी दीपेश भैया गाना लिखे थे, मुझे चिंता नहीं है बहन। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। किस बात की चिंता नहीं है बहना? तुमको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सरोज बहन, हाँ हम बताना ही भूल गए। गाना बताओ, वो जो भी वो दीपेश जी ने लिखा था गाना, माटी खोदने वाला, बहुत अच्छा गाना है ये। इसको हम जानते भी हैं लेकिन थोड़ा सा भूल गए हैं। कहाँ के पियर माटी, कहाँ पे ना पढ़े के ना लिखे के, भजे के बार के हो चाहना। ये तो ब्याह गीत है। क्या बात है, काल आया है। अच्छा जाओ उठा लो, बात कर लो। आपको बहुत सारे गाने आते हैं दीपेश जी, बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं आपको तो। लेकिन ये माटी खोदने वाला गाना हम थोड़ा सा भूल गए हैं। हम लोगों के यहाँ होता बहुत है ये गाना। सपोर्टिंग कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। Like done. थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, मेरी बहना आ गई। कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? गाना ठीक हूँ, अच्छी बात है। आप बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया बात है।
हाँ मैं फिर समय चले ले कर जीना मरना जी। कोई बात नहीं, आप लिखिए मत, हम याद कर लेंगे। जय हमें आता था लेकिन हम इस समय भूल गए हैं थोड़ा सा, लेकिन कुछ कुछ याद आ रहा है। हम अपने भूलने से परेशान हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मथुरा नगरिया कहाँ लोरी बटैया, अरे मथुरा नगरिया कहाँ लोरी बाट, अरे बेटी तोरा बाबा ढोढ़ाई बर जाई मथुराया, अरे बेटी तोरा बाबा ढोढ़ाई बर जाई मथुरा। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। आप भी सो जाओ, आपको भी नींद आ रही होगी। नहीं मोरी मैया रे मथुरा नगरी लोरिया, अरे मैया ससुरे कही काजी रहुआ औरत लोग समझे लोग की शादी की खाली के गाना नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं समझते हैं। आपको बहुत अच्छा गाना आता है, बहुत ही अच्छा। आपकी तो तारीफ करने वाली है, लेडीजों का तो गाना है ही है, वो तो गाती ही हैं, का तो बनता है। लेकिन आप बताइए, आप भी गा लेते हैं इतना अच्छा। का like done, thank you, thank you। विशाल कुमार। कैसे आप कैसी हो? बहुत अच्छे हैं विशाल जी, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? लाइक डन, थैंक यू, थैंक यू। आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ चंदा मामा। अरे आई, अरे आई, नदिया किनारे आई, सो के दूध भात लेके आई हमारे बाबूजी के खिला। कहाँ दीपेश भैया,
आप तो इतना अच्छा इतनी अच्छी लोरी सुना रहे हैं कि सच में नींद आने लगेगी। राधे 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 राधे। विकास कुमार मिश्रा। दीपेश जी, आप बहुत 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 अच्छी अच्छी जानकारी है आपके पास। बहुत बहुत थैंक यू आपका। के पियर माटी। अभी गाना तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गवा है। कचैल दवा पे आया मोरी बेटी, दहिया खवाया सड़िया रे, एक गुना माना मान्यू मोरी बेटी, की ऊपर देसिया कैसात। तो बिटिया ने क्या कहा? मंगिया कैसे दूरा महंग भाई मैया, चुनरी भाइया न मोल, यही रे सिंदूरवा के कारण मैया छोड़ी दे देसवा तोहार, यही रे सिंदूरवा के कारण मैया छोड़ी दे देसवा तोहार। राधे 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 राधे, सभी को राधे राधे। एक दो विवाह गीत हमको लगता है अपलोड किए हैं, अभी हम करेंगे किसी दिन समय मिलेगा तो। दीपेश जी, आपके पास एक ही आईडी है कि और भी है? पंडित जी जैसन। सुने हैं। जैसे कपड़ा पर कई नरिया, वैसे पंडित के मुँह करिया। पंडित हाली हाली पोथिया विचार। राधे 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 राधे। टाइम क्या हो गया? 12 बजने वाले।
आप कहाँ थी? बहुत बढ़िया। राम राम सीताराम। पंडिताइन जी, आप शादी करवाने नहीं जाती हो? हमको तो कोई ले ही नहीं जाता है। राम राम सीताराम सीताराम। और बताओ सरोज बहन। कोई राम राम सीताराम। के बाबे जी, रहुआ गुस्सा मत जी। जब दादाजी रहने तक कहने के शादी करनी चाहिए सब। नहीं भैया जी, इसके लिए हम काहे गुस्सा होंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है सरोज बहन, सो जाओ मेरी बहना। हम कैसे मना कर सकते हैं सोने के लिए? गुड नाइट सरोज सिस्टर, गुड नाइट। हम भी जात बानी सोए। लाइट चल रही है, रख देंगे, चलती रहेगी, सुबह बंद कर देंगे। सभी लोग सोने जा रहे हैं भाई, तो हम भी जा रहे हैं। आपको कोई नहीं ले जाता है शादी कराने, तो मैं ले चलूँगा जी। आपको कोई नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। नहीं हंसना है। तो जानू न मंडप के काम कौन साली। अपने पंडित का काहे नहीं कहा तू है? तू जानो न वेद पुराण का, साले पंडित आयो है सरोज बहन। ओ सरोज बहन, अपने वाली बात आवे तो ना काहे काहे के चाहिए। आ जाइए सुबेरे पंडित जी, तो उनका गायक सुनाओ
अरे तू तो जान्यो ना वेद पुराण, तू का साले पंडित भयो। हाँ तो आगरा ना पड़ रही है। मालिन बेचारी का और नाम उनका सभी तो डाला था, पंडित का सभी छोड़ दिया था यार। सरोज बहन किसी दिन आओ तो साथ में हम लोग गाना बनाएंगे। कैसाले पंडित गया। कि कैसाले पंडित गया, अरे तो जाने ना वेद पुराण, कि कैसाले पंडित बना। पता है सरोज बहन, टाइम नहीं मिल पाता हमको गाना बनाने के समय। समय बहुत सारा काम है हमारे पास। इस समय हम बहुत नहीं बना पा रहे हैं। बाकी सोचे थे कि बढ़िया बढ़िया गाना बना के अपलोड करेंगे अभी 2-4 दिन और, उसके बाद बनाएंगे फिर। पता है सरोज बहन, सुबह वाली लाइव में इतना काम हो जाता है कि उतने समय हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। बस सपोर्टिंग कमेंट देखते रहते हैं, किसी किसी का जवाब दे पाते हैं। तो इसलिए आज हमने सोचा बताओ सरोज के पास खूब टाइम मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी भी इस समय कुछ मजबूरियां हैं, आपको बताऊंगी बाद में। अभी नहीं बता सकती, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप तो बिजी हैं ही हैं। आपका तो फिर भाई क्या कहना, आपके यहाँ शादी है भाई, लेकिन हमारे यहाँ शादी तो नहीं है, लेकिन शादी से ज़्यादा काम हो गया इस समय। नहीं, अभी तक मेरा ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा समय लगेगा नहीं ख़राब होने में। यही तो प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरों की है। हमको भी शादी का तो शादी कराने जाते हैं, मेरा छोटा भाई चार है। वाह भाई, आज तो सब पंडित पंडित इकट्ठा हो गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अभी घर वाले, बस यही तो सरोज बहन, यही तो प्रॉब्लम है। पता है सरोज बहन, थोड़ा सा चूक जाओ ना तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन सबकी देखना पड़ता है, देखना भी चाहिए, क्या करोगी बहन। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद बहुरिया आ जाएगी,
आपको पर फुर्सत मिल जाएगी। थोड़ा तो हेल्प हो ही जाएगा, अकेले से दो हो जाओगी। मेरे बारे में सोचो, मेरा तो इस समय कोई भी सहारा नहीं है। सरोज बहन, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पति देव हमारा बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बेचारे का बहुत बहुत धन्यवाद है। पता है इस समय 5 लोगों की वाचिंग है। बताओ, बेटी की नंद की सगाई है, अब नाराज हो गए हैं। इसमें नाराज होने की क्या बात है भाई? बेटी की नंद की सगाई है तो उसमें तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप सगाई में जा रही हो? हो। आप समझी। मैं नहीं, मैं तो किसी की शादी में नहीं, सगाई में नहीं जा रही हूँ, वो तो घूमने ही जा रही हूँ। पता है सरोज बहन, 6 लोगों की वाचिंग है इस समय। 6 लोग हमारी लाइफ में हैं, लेकिन सब ऊपर लटके हुए हैं। आपको अपनी पड़ी है। किसको बहन? मुझे नहीं पड़ी है अपनी। ऐसा कुछ नहीं है भैया जी। ये बताइए। नहीं नहीं, बेटी कोई नहीं छोड़ देगा बहन, बिल्कुल नहीं। कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और दीपेश जी, आपको हम बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी फैमिली में 2 4 6 लोग खाने वाले हैं, कोई कितना किसी को दे देगा भाई। आज के ज़माने में कोई कुछ नहीं कर पाता है। एक लोग हो, अगर मियाँ बीवी हैं तब तो चलता है। तो कोई दिक्कत नहीं, जाइए आप शादी में, ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल जाइए भाई, आप आएंगे जाएंगे नहीं तो रिश्ता कैसे चलेगा हमारा? सही बात है, 4 दिसंबर को है सगाई। चलिए कोई बात नहीं, वो तो सब समझ जाएंगे आगे पीछे। जेठ जी के बेटे की शादी है, दोनों एक साथ है। हाँ, वो तो आपने बताया था कि सगाई और शादी एक साथ है। अच्छा, इसीलिए बोल रहे हैं। जानकी, जानकी है। नहरा गए।
जानते हैं इसको। नहीं, बिल्कुल जाना पड़ेगा भाई। नहीं जाए तो परवै करे बहनी, कैसे ना जाए कपरे। बेटी के यहाँ यही शादी है, उसके बाद कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल जाए परी बहनी, जाओ। नहीं, छोड़ने का क्या मतलब होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। बहन बेटी ज़िंदगी भर सुनेंगी, बिल्कुल भाई। अगर आपकी थोड़ा सा मिस्टेक होगी तो उनको पूरी ज़िंदगी सुनना पड़ेगा। नहीं, आप परेशान मत हो, आप जाओ। नहीं समझ रहे हैं तो बाद में समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब चलता रहता है परिवार में। बिल्कुल भाई, एक ही नंद है तो बहुत ज़रूरी है। जी चिंता नहीं है, नहीं चिंता नहीं करनी चाहिए, तो सब फैमिली में चलता रहता है इतना। उनके पास नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, आप हो, आप संभाल लोगी, बहुत है। मियाँ बीवी में से कोई भी पहुंच जाता है तो किसी को बुरा नहीं लगता है। बोले मैं बेटे की शादी में नहीं आऊँगा। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, क्या करोगी, कह दो नहीं आओ भाई, अब और क्या बताएं। इसलिए आप जाइए, आप अपना पहले वहाँ का निपटाइए, बाकी तो जो होगा वो देखा जाएगा। चलो भाई, अब हम भी सोने जा रहे हैं। मैंने कहा कि मेरा बेटा जाएगा शादी पे, का आशीर्वाद ले। बिल्कुल सही कहा। अगर दूल्हा जा रहा है तो किसी के न जाने से बारात नहीं रुकती है। नहीं नहीं भाई, अब इतने समय अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो उसके जवाब में तो यही बोलना पड़ेगा ना। भाई जितना आपका है उतना हमारा भी, अगर आप ऐसे बोल सकते हो तो फिर तो बोलना ही पड़ता है।
नहीं सुनना भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनना सरोज बहन। धमकी सुनने की कोई बात नहीं है। बहन बेटी के लिए मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। बिल्कुल बहन, बिल्कुल। दीपेश जी आप चले गए क्या? सो जाओ, अब सोने जा रही हूँ। कल सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहन, घूम जाओ, बाहर जा रही हो वहाँ मन लगाओ। ये सपोर्ट वपोर्ट तो रोज़ का हो गया है बहना, इसके लिए आप परेशान मत होना। गुड नाइट बहन, गुड नाइट, गुड नाइट। आपकी यात्रा मंगलमय हो।
काजी चल गई नी, काजी कुछ बोल दी तो मैं भी चला जाऊंगा। ओके, चलिए जी, आप भी सो जाइए। दीपेश जी, राइट डन, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम। आप एक बार बोल दीजिए फिर मैं चला जाऊंगा। दीपेश जी, अभी हम लोग सोने चल रहे हैं। थोड़ा और बात करिए ना जी। हाँ लोग क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। नहीं, सुबह जल्दी उठना रहता है ना, इसलिए अभी हम लोग सोएंगे नहीं तो सुबह उठेंगे कैसे। सवेरे उठने के लिए रात में सोना पड़ता है पहले।
हम्म।
राधे राधे आंटी जी, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।